Hi everyone. Today we will be discussing about chemotoxic action. तो देखो chemotoxic effect जो होता है वो केटायंस के कारण होता है बेसिकली. तो एग्जाम स्पेशली सोडियम आयन केटायन के कारण होता है और इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखता है? न्यूरॉन्स के ऊपर, मायोकार्डियल सेल्स के ऊपर, कैपिलरी एंडोथेलियम के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, किडनी के ऊपर, है ना. और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज रेनल परफ्यूजन, लो बीपी, पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन, glomerular injury manifests as proteinuria, tubular injury due to osmolarity and chemotoxicity, ischemia. ये सब के कारण. Contrast media precipitation of time horsefall, proteins that block tubules, swelling of renal tubular cells causing obstruction. इम्यूनोलॉजिकल टॉक्सिसिटी के बारे में जानते हैं जो कि एलर्जिक टॉक्सिसिटी में आता है. तो देखो इसमें क्या होता है, डीएक्टिवेशन होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का. और इंसिडेंस जो है इसका वो एडवर्स कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस का टू इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इज अबाउट 1/3 ऑफ इंसिडेंस फॉलोइंग इंट्रावेनस इंजेक्शन. ठीक है, बिकॉज जो लेटर है वो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ वेसोएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द मास्ट सेल्स और डीएक्टिवेट एसीई इन लंग. एसीई डीएक्टिवेट करता है ब्रेडिकाइनिन को. कॉन्सेंट्रेशन इसका राइज जब करता है आईवी इंजेक्शन के साथ ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया. Due to the damage to the endothelium, which initiates the activation system, which in turn may be responsible for adverse anaphylactoid reactions. Activation of complement kinase, coagulation, fibrinolytic system, inhibition of cholinesterase with consequent vasal overstimulation, acetylcholine release, collapse, bradycardia, bronchospasm, release of vasoactive substance like histamine, bradykinin, serotonin. एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ये प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर ही होता है. एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन नॉन सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर होता है. एलर्जिक रिएक्शंस कुछ वर्कर्स इसको इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते. रीजंस नॉट डोज रिलेटेड. रीजंस अगेंस्ट may not occur first time. Reasons for common in patient with bronchial asthma. Reason against no antibodies against contrast media directed. Reasons for liberation of histamine from the mast cell was experimentally shown. Prior antihistamine does not totally prevent reactions. Cardiac arrhythmias and arrest do not occur in allergy. High risk group persons. Prior reaction to contrast media 11 times more prone. History of allergy 4 times more prone. Cardiac disease 4 times more prone. Asthma 5 times more prone. Diabetes 4 times more prone. Old age 4 times more prone. ठीक है. Neonates 4 times more prone. Myelomatosis, polycythemia, sickle cell anemia, pheochromocytoma, homocystinuria. Pre-medication for high-risk group. Vizolone 10 mg for 2-3 days. Prednisolone. Tab-Rantac 150 mg for 2 days. On the day of procedure, if necessary, injection 1 ampoule of hydrocortisone. Minor. Severity of reaction 1 in 20 cases 5%. Nausea, vomiting, mild rash, light headache, mild dyspnea. Needs no treatment but requires assurance. Intermediate 1 in 100 1%. Extensive urticaria, facial edema, bronchospasm, laryngeal edema, dyspnea, mild chest pain or hypotension requires treatment but generally there is no need for hospitalization. Severe reaction 1 in 2000 0.05%. Circulatory collapse, pulmonary edema, severe angina, myocardial infarction, convulsions, coma, cardiac respiratory arrest, requires hospitalization, intensive care. Mortality in 1 in 40,000, 0.0025%. ट्रीटमेंट when जब भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट वहाँ पे है. दो बेसिक रूल है टू रिमेंबर दिस. मेक श्योर दैट द ड्रग्स फॉर एलर्जिक रिएक्शंस आर अवेलेबल बिफोर इंजेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट. और दूसरा, नेवर लीव द पेशेंट अनअटेंडेड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट हैज़ बीन इंजेक्टेड जब तक कि एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए.
कोई भी पेशेंट जिसको सीरियस रिएक्शन हुआ है 60 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आफ्टर 60 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया कोई भी सीरियस रिएक्शन नहीं होना चाहिए. जनरल प्रिंसिपल इन द यूज ऑक्सीजन, epinephrine and corticosteroid. Oxygen and equipment for assisting ventilation should be readily available होना चाहिए. Current recommendation for use is high dose oxygen is at the rate of 10 to 12 liters per minute via face mask. O2 can be provided at up to 100% concentration. Currently, it is recommended that high concentration of O2 should be administered in patient in respiratory distress regardless of his or her pre-existing conditions. Epinephrine, most important single medication in treatment anaphylactoid reaction is epinephrine. Powerful sympathomimetic agent, activate alpha and beta adrenergic receptor, thereby producing peripheral vasoconstriction alpha effects, increased cardiac contractility, cardiac rate beta effects, smooth muscle bronchodilation, B2 effects. Epinephrine is available in two dilutions. 1 in 1000 consists 1 milligram epinephrine 1 ml of fluid. ये तो या तो आपको इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. 1 in 10,000 consists of 1 milligram epinephrine 10 ml of fluid. इसमें IV एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा. Epinephrine is administered SC in 0.1 to 0.3 ml. Can be repeated every 10 to 15 minutes until a dose of 1 milligram is administered. IV in the same dose of 0.1 to 0.3 milligram. So due to greater dilution, 1 to 3 ml is injected. Life-threatening complications of epinephrine are hypertensive crisis and myocardial ischemia and infarction. With cardiac disease, with hypertension, beta blockers. ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे.